हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जानें कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 1. Which one of the following is the natural source of light? Option A, electric bulb. Option B, sun. Option C, tube light. Option D, moon. The correct answer is option B, sun. Question number 2. The object which does not have light of its own is Option A, shining mirror. Option B, light bulb. Option C, star. Option D, lighted matchbox. The correct answer is option A, shining mirror. Question number 3. A torch is a Option A, luminous. Option B, non-luminous. Option C, both of these. Option D, none of these. The correct answer is option A, luminous. Question number 4. Which of the following is a luminous object? Option A, pencil. Option B, chair. Option C, sun. Option D, table. The correct answer is option C, sun. Question number 5. Glass sheet is a/an. Option A, transparent object. Option B, opaque object. Option C, transparent object. Option D, none of these. The correct answer is option C, transparent object. Question number 6. Solid wax is Option A, transparent. Option B, translucent. Option C, opaque. Option D, none of these. The correct answer is option C, opaque. Question number 7. Objects which does not allow light to pass through them are called Option A, opaque objects. Option B, transparent objects. Option C, translucent objects. Option D, none of these. The correct answer is option A, opaque objects.
Question number 8. A mirror is an example of Option A, transparent object. Option B, opaque object. Option C, translucent. Option D, none of these. The correct answer is option B, opaque object. Question number 9. Which is an example of a translucent object? Option A, a thin glass sheet. Option B, a thin paper sheet. Option C, a thin iron sheet. Option D, a thin wooden sheet. The correct answer is option B, a thin paper sheet. Question number 10. The formation of shadow of one celestial body on the other is known as Option A, image. Option B, reflection. Option C, eclipse. Option D, none of these. The correct answer is option C, eclipse. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।